जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान के एटमी असासे, नाउ आई एम गोना से दिस इन पाकिस्तानी लैंग्वेज। पाकिस्तानी बोलते हैं ना टीवी में, एटमी असासे क्या हैं यार? हमारे एटमी असासे हमने अचार डालने के लिए थोड़ी रखे हैं। एक वो उनका लाल टोपी वाला आता है, वो तो बोलता है रोज यूज कर लो। बट देखिए, ये जोक्स अपार्ट, एज भारतीयंस, एज इंडियंस, वी नीड टू नो यार, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दीज वेपन्स। इनका गेम क्या है? व्हाट इज द प्लान? हाउ डू पाकिस्तानीज एक्चुअली प्लान टू यूज देम? इसका कोई यूज शूज है कि ये, अब वो बोलते हैं ना, दिवाली के पटाखे तो नहीं लगा रखे इन लोगों ने। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंट वेपन दैट दे गोना यूज, जो भी ये लोग बात करते हैं। सर से बात करने से पहले एक्चुअली सर को इंट्रोड्यूस करता हूं मैं, कर्नल विनायक भट्ट, हुज डन अ, मैं एक्चुअली इनकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, थोड़ा सा घबरा गया मैं देख के। बट लेट मी टेल यू, सर इज डन अ वेरी इन डेप्थ स्टडी। सो आप लोगों को आज बड़ा डेप्थ में फोटोग्राफ्स के साथ सर दिखाएंगे पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स की सच्चाई क्या है और कैसे वो चलते हैं। बट एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा 10 सेकंड में, कि जो भी कह लीजिए, दैट इज द क्राउन ज्वेल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, वो बोलते हैं ना, सिर ताज का वो सबसे बड़ा जो डायमंड है वो है पाकिस्तान का। आज अगर पाकिस्तान एक साथ है और पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ पाकिस्तान. This is something we need to understand. And let me welcome Colonel Vinay Bhatt. Sir, good evening and welcome to the show. Thank you very much, Adi. Good evening to you and all your viewers. I must first apologize for the last Sunday's fiasco. There were no lights and I couldn't come live that day. But here we are today speaking on the same thing. और आज बात करेंगे हम लोग। आप कह रहे थे कि ये लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही असला और बारूद बना के रखा है क्या हमने। Musharraf was there. He was also, he used to say very openly कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है. That was his patent, sentence कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है. भाई चूड़ियां तो किसी भी फौजी ने नहीं पहन रखी है, पर क्या वो लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं? अभी जैसे बालाकोट हुआ था कि क्या वो लोग हमारे ऊपर हावी हुए या नहीं, ये कहने की बातें हैं कि हाँ जी उन्होंने हमारा तैयारा गिराया, पर हम लोगों ने प्रूव किया है कि उनके एरिया में घुसकर, और ये पीओके नहीं था, ये उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके हम लोग अंदर गए और वहां बम दागे. अब बम गिरने से एक कौवा मरा या 300 टेररिस्ट मरे, ये कहने सुनने की बातें हैं, पर जो हमने कार्रवाई करके दिखाई है तो वो हिम्मत की बात होती है, और वो हिम्मत पाकिस्तान में नहीं थी. We called off their bluff that time of the nuclear threat that they have always been using against India each and every time. Each and every politician, military leader, you name a person and he has threatened India with nuclear use. So let's begin with this little trailer. एब्सोल्युटली सर। देखिए, सबसे पहली तो चीजें, इनके काफी सारे वो होते थे, मिनिस्टर सिनिस्टर होते थे, पाव पाव के बम हैं, ये है वो है। अब सी देखिए, मैं आई लुक एट ये जो डायलॉग मारते हैं ना सर, आई स्टिल लुक एट देम विद अ लिटिल सीरियसनेस। पाव पाव के बम मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, TNWs जिनको बोलते हैं। नाउ दीज आर नॉट समथिंग्स, देखिए, दीज आर नॉट समथिंग्स टू बी किडेड अराउंड विद। बट जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने इसके बारे में लिखा भी है, एंड बाय द वे गाइस, सर इज पार्ट ऑफ द रक्षा राज्य यूनिवर्सिटी। आप इनको जरा सिर्फ गूगल सर्च करिए और सर को ट्विटर में फॉलो करिए। सर काफी चीजें डालते हैं। सर ने बालाकोट के बारे में जो पाकिस्तानियों ने भ्रम फैलाया था ना कि यार कुछ नहीं हुआ था, ये वो, उसकी काफी फोटोज डाल के पाकिस्तानियों को काफी एम्बेरस किया था। तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सर से जो पूछना चाहता हूँ, ये जो इनका जो न्यूक्लियर प्लान है, कि भाई अगर भारतीय फौजें पाकिस्तान के अंदर घुसेंगी अटैक के लिए,
इनका प्लान क्या है कि हम भारतीय फौजों के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स से उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। उसमें मेरे को ठीक है, वॉर प्लान है। मेरे को जो अजीब लगता है सर कि आप अपने टेरिटरी में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की बात करते हो। आप ये नहीं बोल रहे मैं दिल्ली में बॉम्ब फेंकूंगा, मैं जयपुर में बॉम्ब फेंकूंगा, मैं पंजाब में बॉम्ब फेंक ना, मैं अपनी टेरिटरी में बॉम्ब फेंकूंगा। ये कैसी पॉलिसी है सर? Acha, first of all, you spoke about RRU. I do work there, but here today I am in an individual capacity. हाँ जी, I एब्सोल्युटली। my views are personal views. They do not belong to the RRU or my previous organization. That is the Great Indian Army. So if I make any mistakes, they're mine. And if people like it, they obviously are because of the training that I have received in the Indian Army. अच्छा, आप बात कर रहे थे एरिया की, किस एरिया में दागना चाहते हैं। वो तो जैसे मैंने रिसेंटली लिखा है कैप्स में, दैट इज सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज। तो उनका अगर लिंक पे जाएंगे आप, फर्स्ट पेज पे ही आपको दिखाई देगा, मेरा सैटेलाइट इमेजरी है, अंडरस्टैंडिंग द पाकिस्तान जीरो रेंज न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी। तो जो किदवाई ने उनके यौम तकबीर के दिन पे जो स्टेटमेंट दिया था कि उनके पास ऐसे न्यूक्लियर हथियार है जो कि 0 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक जा सकते हैं। वो जो है शाहीन है 2750। इसलिए कहते हैं वो लोग कि अपना जो अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां तक पहुंच सकते हैं। वो पाकिस्तान से तकरीबन 2750 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए वो जीरो से कहते हैं। पर ये जीरो अभी आया है रिसेंटली, जब तक TNW उनके पास डिप्लॉय नहीं थे तब तक वो बोलते नहीं थे। इन्होंने तकरीबन 5 साल पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए। एटलीस्ट सैटेलाइट इमेजरी पे हमको नासर के ट्रैक्टर इलेक्टर लॉन्चर्स TEL जो कहते हैं, जिसके ऊपर मिसाइल रखी जाती है और उनको लेके घुमाया जा सकता है कहीं भी। सो दे आर रोड मूवेबल, ऑफ रोड ऑल्सो दे कैन बी मूव्ड। सो in such a scenario, when we have seen it on satellite imagery, then we say कि okay, they have deployed। और ये नासर की डिप्लॉयमेंट जब मैंने सबसे पहले लिखी थी प्रिंट के लिए, प्रूव किया था इनको सैटेलाइट इमेजेस के साथ, उस टाइम तकरीबन 5 साल पहले की बात है ये। उस टाइम से लेकर आज तक ये लोग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते आ रहे हैं। पर ये अभी है इस साल पहली बार कि जनरल किदवाई ने ऐसी बात कही है कि जीरो रेंज से। तो जीरो रेंज का क्या मतलब है, ये बहुत ही कठिन सवाल है जिसके ऊपर सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं। वेस्टर्न लोग कहते हैं कि ये शायद हो सकता है कि न्यूक्लियर आर्टिलरी यूज करना चाहती है। पाकिस्तान काफी दिनों से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ना छोटा करने की कोशिश कर रहा था। They were trying to miniaturize the warhead so that it can be fitted into a smaller caliber artillery gun also. So it's generally 155 mm की होती है, तो उसमें डाल के दागा जा सकता है। वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर होता है। और जो आजकल बातें हो रही है जीरो रेंज की, तो कैप्स के मनदीप सेठी है, उन्होंने लिखी थी एक आर्टिकल, उसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ये लैंड माइन्स हो। तो लैंड माइन्स भी हो सकती है और पैराट्रूपर्स भी लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी और खतरनाक चीज जो है, जो पाकिस्तान के पास ही है सिर्फ आजकल, कि उनके टेररिस्ट इस बॉम्ब को लेके जा सकते हैं कहीं भी किसी जगह पे भी, और वो जीरो रेंज पे उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास
काफी हद तक चीजें नहीं है इसको रोकने के लिए। तो टेररिस्ट का एक्शन जो है वो काफी खतरनाक है। उसके लिए बड़े सिटीज में हमको न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स अभी तक हमारे पास आए नहीं है। वो यूएस एंड अदर countries, big countries have them. They use them on helicopters and various other platforms, but India does not have them right now, and we should be prepared for such an eventuality. तो जो ये प्लान कर रहे हैं वो कोशिश करते हैं हमेशा पाकिस्तान कि ये दिखाने के लिए कि उनका हमला उन्हीं के एरिया में हो रहा है, तो आपके एरिया में हमने हमला नहीं किया है तो आप सेकंड स्ट्राइक कर नहीं सकते, जो कि हमारा प्रॉमिस है हर एक कंट्री को। जब हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, हम ये भी साथ में कहते हैं कि आवर सेकंड स्ट्राइक will be so devastating that the other country will not be able to bear the cost of that devastation. तो पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये है। और इससे बचने के लिए पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है, जैसे आपने पूछा कि एरिया हमारे अपने एरिया में ही हम दाग रहे हैं। जब आपकी फौजें जो कन्वेंशनल आर्मी है, जब आगे बढ़ के आती है, आईबी क्रॉस कर जाती है, तो उसके बाद हम यूज करेंगे उनके ऊपर। ये उनका प्लान है और इसी प्लान के चलते उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं और डिप्लॉय भी किए हैं। ये आज तक जो मैंने देखा है तकरीबन 2 जगह पे है, गुजरांवाला और पानो अकिल, और उन्होंने स्टोरेज प्लेसेस बनाई है 3, जो कि अलग अलग जगह पर है। तो ये 5 मिलके पूरा एंटायर वेस्टर्न बॉर्डर इज कवर्ड, पूरे बॉर्डर को कवर करता है। Whenever you want me to, आप मेरे को बता दीजिएगा स्लाइड्स आपकी जो हैं। हाँ, आप वो गुजरांवाला और गुजरांवाला की दिखा सकते हैं पहली स्लाइड। हाँ जी, ये है ये सर गाइस, ये चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। एंड इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपको दिखेंगी नहीं ओपन सोर्सेज में। ये सर ने बड़ी जबरदस्त स्टडी करी है, सो I'd let sir take the boat forward, sir. या ओके, ये है गुजरांवाला, जो कि सबसे नजदीक है इंडिया के, जहां पर आज की तारीख में उनका 34 है। और जो इनकी आर्मर्ड डिवीजन थी खारिया में पहले, वो अभी 2006-2007 में इन्होंने शिफ्ट करके गुजरांवाला में लेकर आए हैं। और उसके बाद ही ये सब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है और ये फैसिलिटी बनाई गई है, जहां पर टीएल जो मैंने बताया, ट्रैक्टर इरेक्टर लॉन्चर, जहां पर रख सकते हैं। इसके गैरेजेस है जहां पर वो उनको खोल के टेस्ट करके फिर बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे गैरेजेस है जो कि उसका तापमान कंट्रोल किया जा सकता है। They're generally air conditioned garages. They also have these igloos where they keep warheads and PAL systems separate from the delivery system. But then it is really not that far away. It is as good as an alert position that these weapons already are in. और ये वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को समझाना बहुत ही कठिन है कि भाई ये पाकिस्तान तो हमारे से 5 मिनट की दूरी पर है। उनके लिए ये फैदम करना ही मुश्किल है कि जो फ्लाइट टाइम है मिसाइल का वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। और इसमें अगर मतलब उनके लिए तो कम से कम 30 मिनट्स लग जाते हैं। किसी भी हिसाब से वो जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो उनको तकरीबन 30 मिनट लगते हैं रशिया से यूएस या यूएस से
China, whatever way they look at it, they take 30 minutes, about 30 minutes. And we are here, the flight time is only 5 minutes, maximum 10 minutes. And in such a scenario, it is so very difficult to delineate things कि अच्छा ये कन्वेंशनल हो सकता है वॉरेट, ये न्यूक्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सब चीजें ढूंढना, स्पेशली when the fog of war is so strong, people, the politicians are saber rattling and everybody is making noises. जो ये कोर कमांडर लेवल या उससे नीचे ये लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, अगर वो कहीं गलती से गलत डिसीजन ले ले, जिसके दिमाग में है कि हाँ भाई मैंने 1971 का जो डिसमेंबरमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इंडिया ने किया है उसका मैंने बदला लेना है, ऐसी कोई चीज अगर उसके दिमाग में है तो वो ये इस्तेमाल जरूर करेगा, और वो बहुत ही खतरनाक होगा, सिर्फ हम दोनों देशों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसके आगे का दिखाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये है क्लोजअप, दिस इज अगेन पानो अखिल, exactly similar TL garages and igloos have been constructed. They are connected to each other so that whenever required the connection can be made and an active missile can be moved out of the garage and then further launched. Next one please. Yeah, it is the same thing I explained already. Next one. हाँ, ये है Pakistan also has the Air Force. Their Air Force is also practicing this on RAD and RAD-2. These are the missiles. फिर से इसमें चाइना का हाथ है, चाइना ने टेक्नोलॉजी दी हुई है, और ये अभी आपको नॉर्मल एक एयरक्राफ्ट शेल्टर लगता है और उसके बगल में दूसरा शेल्टर है जिसको कि उन्होंने थोड़ा सा कवर किया हुआ है। इसमें आपको वैसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर जब आप इसकी पुरानी हिस्टोरिकल पिक्चर देखते हैं, नेक्स्ट इमेज प्लीज, तो ये है हिस्टोरिकल इमेजरी जिसमें आपको दिखाई देता है ये जब बना था वो कैसे बना था। तो नीचे आप देखेंगे कि बाईं तरफ को वो जो छोटा सा शेल्टर था वो है, और दाहिनी तरफ को ये एक वॉल्ट सिस्टम है बड़ा वाला। तो जो छोटे वाले में है उसमें वेपन रखा जाएगा और कंड्यूट के थ्रू ऑटोमेटिकली इधर आके दूसरे वॉल्ट सिस्टम में आके एयरक्राफ्ट के ऊपर लग सकता है। तो ये लॉन्चिंग के लिए अलर्ट सिस्टम्स में जब एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है अपने शेल्टर के अंदर, उसी टाइम किसी और को पता नहीं लगते हुए, सैटेलाइट इमेजेस को बिल्कुल पता नहीं लग सकता एक बार ये बनने के बाद कि भाई वेपन लोड हुआ है एयरक्राफ्ट के ऊपर या नहीं, ये हमको कभी भी नहीं पता लग सकता। सो इट इज 100% alert system, which is really a first use system. The moment an aircraft comes out of it is a danger sign for India and rest of the world. This is what Pakistan is trying to threaten us with, and they are trying to tell us that we can and we will use this weapon in case required. ये बड़ा आपने चीज बताई है, तो दैट मीन्स टू से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट्स, ये ऐसे जो भी हैंगर्स हैं, बिकॉज उनके पास दो मोड्स हैं डिलीवरी की सर, एक तो रॉकेट्स हैं, दूसरे एयरक्राफ्ट हैं। अभी वो थर्ड जो न्यूक्लियर ट्रायड है उनके पास नहीं है। सो दिस मस्ट बी केप्ट एट वॉच ऑल द टाइम सर। अभी जो स्टेटमेंट किदवाई जी ने दिया था
जी। और उसके पहले का भी 3 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि उनका ट्रायड तैयार है, ये कहा था उन्होंने, जबकि उनका जी। ट्रायड तैयार नहीं था उस टाइम। उस टाइम वो लोग बाबर मिसाइल की बात करते थे। उसको भी मैंने एक्सपोज किया था समवेयर इन 2016 आई थिंक, 2016 और 2017 बिगिनिंग इट वाज, जब उन्होंने बाबर मिसाइल का प्रक्षेपण दिखाया था वीडियो द्वारा, जो कि मैंने क्लियरली प्रूव किया था, सैटेलाइट इमेजेस दिखाए थे उन्होंने। तो उसमें मैंने प्रूव किया था कि ये इतनी स्पीड है, तकरीबन 5,000 किलोमीटर के आसपास की स्पीड दिखा रहे थे। वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पाकिस्तान के लिए अचीव करना। सो ऑब्वियसली दैट वाज अ फेक वीडियो एंड इट दैट ट्वीट ऑफ माइन हैड गॉन वायरल। और ये हमेशा कहते रहे हैं कि हमने तो बाबर और राड तैयार कर लिए हैं। राड का तो हमको पता है कि उनके पास है, तो बाबर का उस टाइम था नहीं, जबकि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था पिछली बार, 3 साल पहले की बात है, जब किदवाई जी ने स्टेटमेंट दे दिया था। सो जनरल किदवाई इवन दिस टाइम हैज मेंशन्ड द ट्रायड, जो सी लॉन्च्ड है, वो फ्रिगेट्स के ऊपर होंगी प्रोबेबली, और मे बी ऑन सब सबमरीन्स। They have tested underwater also the Babar. Babar is basically C-802 of Chinese origin, और उसी के बेस पे उन्होंने बनाया हुआ है, जो फ्रिगेट के ऊपर है। अब पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया है, जो अंडर वाटर है, जो really I doubt that efficacy of that particular weapon. But then they do claim to have a third platform also, that is either the ships or underwater submarines. Amazing, sir. Yeah. Should we move forward, sir, presentation में? Yes, yes. So, अच्छा, ये मैं दिखा रहा था जो उन्होंने अभी जगह बना रखी है, not only for TNWs but for other places also, जैसे कुसदार है, कोरी है, केंजी है। यहाँ पर उन्होंने अंडरग्राउंड टनलिंग बना रखी है, काफी सारी जगह पे बना रखी है। और ये एरिया है जहाँ पर 3 उनके मेजर अंडरग्राउंड लोकेशंस है, जो कि पूरी तरह से उन्होंने तैयार कर रखे हैं, पक्के उनके एंट्रेंसेस भी ऐसे बना रखे हैं कि हम लोग अगर अर्थ पेनिट्रेटिंग वेपन्स भी यूज करें तो वो उनको नेस्त नाबूद ना कर पाए, ऐसे उन्होंने एंट्रेंसेस बना रखे हैं इन पहाड़ों के अंदर। और आप देखेंगे तो इसमें जो सिस्मिक एक्टिविटीज है, मतलब अर्थक्वेक वगैरह आने की एक्टिविटीज है पिछले डिकेड की, वो इतनी सारी है। ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं, वो सारे उतनी एक्टिविटीज हो चुकी है वहां पर पिछले 10 साल में। और तब भी इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है कि ये सिस्मिक एक्टिविटीज जहां पर हो रही है उस एरिया में उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स बना रखे, बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं, जहां पर मतलब 30 से 40 वेपन एक अंडरग्राउंड लोकेशन में कर सकते। तो आप इमेजिन कीजिए, अभी 3 लोकेशंस हैं वहां पर, उसमें तीनों में अगर वेपन्स है और वो कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, उसमें कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और वो इंडिया तो हमेशा यही सोचेगा कि हाँ भाई ये अटैक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हुआ है वहां पर। सो वी विल ऑल्सो बी वेरी अलर्ट दैट टाइम। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो जो जीरो रेंज वेपनरी है उनकी, उसके लिए उनको टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर नया वेपन आप बना रहे हो तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो कैसे टेस्ट करते हैं? इनके लिए जो छोटे छोटे अंडरग्राउंड एडिट्स बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, ADITS, तो वो पहले से बने हुए थे। ये बने थे 1980s में, और तकरीबन अर्ली 90s में
यूएस ने इनको रोकने की कोशिश की थी। उस टाइम यूएस ने बड़े स्ट्रांगली इनको बताया था कि भैया इनको बंद कर दो। इनमें कोल्ड टेस्ट्स वेर बीइंग कैरिड आउट, सो दोस कोल्ड टेस्ट्स आर जीरो यील्ड टेस्ट। तो उसमें यील्ड नहीं होती, किसी और को पता नहीं लगता कि भाई वहां टेस्ट हुआ भी है या नहीं। और इसके लिए ये जो एडिट्स बने हुए हैं, ये बने हुए थे पाकिस्तान में। और किराना हिल्स बोल के जगह है सरगोदा के पास, सरगोदा के साउथ में है, और वहां पर ये सब बना हुआ है। वहीं पर जो चाइना ने दिए हुए थे M11 या DF-11 मिसाइल्स जो दिए हुए थे, वो भी रखे हुए हैं, ये कहा जाता है। आज तक किसी ने देखे नहीं है, पर जो महकमा वहां पर बनाया हुआ है वो सर्टनली उसी कारण से बना हुआ है। और ये एडिट्स जो है वो 2016 के बाद फिर से एक्टिवेट किए गए हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। ये दिखाई देता है जो उनके सामने वाला एरिया सीमेंटेड बना दिया गया, अंदर से थोड़ा सा क्लियरिंग वगैरह हुआ है, तो इससे ये पता लगता है कि वहां पर कोई ना कोई टेस्ट जरूर हुए हैं। और इसी का मतलब है कि उन्होंने कोई नया वेपन जरूर बनाया है। अब ये हमको पता नहीं है कि उन्होंने मिनिएचराइजेशन अचीव किया है या नहीं, पर ये सर्टनली एक इंडिकेटर है जिससे हमको पता लगता है कि हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yeah, this is again another place, same place, Kirana Hills, but another underground facility. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 टनल्स खोदे हुए हैं, और 10 में से 6 को उन्होंने इस तरह से कवर किया हुआ है कि उसको आप अर्थ पेनेट्रेटिंग वेपन से भी नहीं मार कर सकते हैं। इनको अलग अलग लेयर्स में बनाया हुआ है। मैंने इसके बारे में भी लिखा था पहले, वो आप गूगल करके पता लगा सकते हैं। किराना हिल्स के जो पहाड़ियां हैं उसमें बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है जैसे बहने वाले का सबसे डीप बेस जैसे बनाया हुआ है, और बाकियों का अलग अलग स्टेजेस में है। तो ये 4 एंट्रेंसेस है टनल्स के, जिसके वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है। मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं। एक में बेस दिखाई दे रहा है जो पॉइंट आउट किया गया है, दूसरों में 2 में दीवारें बनी हुई है, और तीसरे में एक लेयर सीमेंट कंक्रीट का दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इसमें आपको दिखाई देता है कि एक देने वाले में ये वायर मेश का एक लेयर लगाया हुआ है, और स्टील प्लेट्स दूसरे में लगे हुए हैं। सो दीज काइंड ऑफ वेरियस लेयर्स आर मेड, और इनके बीच में ना एक्सप्लोजिव्स भी लगाते हैं वो लोग। तो एक्सप्लोजिव लगाने से ये होता है कि ऊपर से जो भी बॉम्ब गिर रहा है उसके ऊपर, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्लोड होता है, और उसकी कामयाबी को, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करता है। तो इसके लिए ये अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। You can show 2 more slides are there, I think, on this. Wow. Yeah, it is the same different layers. You can see the steel plates, you can see and the difference. If I may just flip these slides for a 5 yeah, seconds, you can see the difference. My God. You can very clearly see the different layers that are being created, and it is over a period of time. You know, they have taken almost 3 years to construct these entrances also. So you can imagine the kind of preparation Pakistan is trying to do in these places. And this shows that they themselves are not very sure of the security of their own weapons. This is what it shows. मैं ये That is the I think आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया सर। मैं सही में बोलूं, you literally read मैं यही चीज बोलने वाला था सर। ये जो डेवलपमेंट, कांस्टेंट डेवलपमेंट आपने दिखाई है,
दिस टेल्स यू दैट पाकिस्तानी आर्मी को पता है, इंडियन आर्मी को पता है, यूएस एस्टैब्लिशमेंट को पता है, ठीक है, बट अ लॉट मोर पीपल नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग देयर। ट्रू। और वो मतलब इसी वजह से उन्होंने ये सब तैयारियां की हुई है कि कल को इनके आप देखिए हर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उठ जाता है और इनकी आर्मी को, एयरफोर्स को अटैक कर देता है। जी इनका तो कोई मतलब जैसे वजूद ही नहीं है इनकी फौज का, ऐसे लगता है। और हर दूसरे दिन जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उनको उसके अगेंस्ट they have to be sure of the security of their weapons, whatever they have produced, which they themselves are really not sure. और यही सब कुछ दर्शाता है इन चीजों से। Yeah, let's go ahead. You have any more questions? You can keep asking. So हाँ, these are नहीं the सर, 6 panels you ब्यूटीफुल। can see. हाँ जी, कैन आई कीप मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर लाइक 2-3 Yeah, सेकंड्स? yeah, you can keep moving forward. सर अच्छा, ये है ओरमाड़ा की फैसिलिटी। ये जनरली कहते हैं कि नेवी के अंडर है, पर इसका किसके अंडर है ये पता नहीं है, क्योंकि ये है तो TNWC जैसे लगता है। उनके साइजेस वगैरह जो मैंने पढ़े हैं उससे लगता है कि ये स्मॉल रेंज वेपन्स होंगे। और ये ओडमारा की फैसिलिटी है, नेवल उनका डॉकयार्ड भी है वहाँ पर। वहाँ उन्होंने ये 2 पर्टिकुलर बंकर्स है, दे आर फुल्ली ऑटोमेटेड, उनके गेट्स वगैरह ऑटोमेटेड है। ये सब कुछ दिखाई देता है सैटेलाइट इमेजेस में। उनके जो व्हीकल्स है वो अंदर बाहर आते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो उनकी फैसिलिटी है, it's got 4 fences. So first 3 तो you can see it on this satellite image also. The innermost fence is very clearly visible. The others are not very clearly visible here. You can go on to the next one, please. ये उसका सपोर्ट एरिया है, बगल में बनाया हुआ है उन्होंने। जो हाईवे गैरेज होता है वो इसके लिए होता है कि जो वेपन लोड हो जाता है तो उसको इरेक्ट करके टेस्ट किया जाता है कि वो सही इरेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। आर्म्ड हो कोई गया कि नहीं? हाँ हाँ, द न्यूमेटिक सिस्टम विच इज देयर इन द व्हीकल, दैट इज टेस्टेड। जो मतलब खड़ा करने का ऑटोमेटिक तरीका होता है, वो तरीका टेस्ट किया जाता है यहाँ हाईवे गैरेजेस में। तभी इसका आप देखेंगे इस बिल्डिंग का जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊंचा है। वो तकरीबन 3 या 4 माले का होता है। वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें भी सैटेलाइट इमेज में बड़ा क्लियरली। ये ऐसे होता है सपोर्ट एरिया इनका। नेक्स्ट, या दिस इज अगेन सपोर्ट एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आपको सीमेंट मिक्सर प्लांट दिखाई देता है। जो रिबास है, मतलब जो सरिया वगैरह है वो पड़ा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है। जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर से उसमें भी लगाते हैं, जो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर से उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये ऊपर वाला एक टनल जो बन रहा है वो दिखाया है मैंने इसमें, कैमोफ्लेज करके। वो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका। ये हम इससे पता करते हैं, जो इससे मिट्टी बाहर निकलती है, the earth spoils which comes out, it is calculated with number of trucks or otherwise where they're dumping। जो उसका डंप बनाया जाता है उसका साइज हम लोग गिन के बता देते हैं कि इसके अंदर कितना एरिया उन्होंने डिग आउट किया हुआ है। तो उससे हमको तकरीबन पता लगता है कि हाँ भाई, इस इतने एरिया में तकरीबन समझो 10 वेपन्स हो सकते हैं या 20 वेपन्स हो सकते हैं। ये ऐसे हम कैलकुलेट करके ऑथेंटिकली हम लोग बता सकते हैं। तो ये तरीका है एक इनको देखने का। ये
एंट्रेंस है, ऑब्वियसली एंट्रेंस में नंबर ऑफ रोड बैरियर्स यू कैन सी, जो व्हीकल के लिए हम लोग भी लगाते हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी उसी आर्मी से निकली हुई है। तो वो भी वैसे ही बैरियर्स यूज करते हैं, एक लेफ्ट को एक राइट को, एक लेफ्ट को एक राइट को। तो वो एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, व्हीकल डायरेक्टली कैन नॉट गो एंड हिट। तो इससे भी यही पता चलता है हमको कि भाई दे आर मोर वरीड अबाउट देयर ओन पीपल कमिंग एंड हिटिंग एट देयर ओन फैसिलिटीज। सो दिस इज द मेन थिंग, whether those terrorists are, state sponsored or not, they are going to attack their own weapons. तो ये बहुत ही अनयूजुअल है, फनी है, और बहुत ही डेंजरस है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्लीज। This is one of the facilities which is very very well laid out, इसके लिए उनको मदद की थी अमेरिका ने। अमेरिका जब शाश्वत होना चाहता था कि हाँ भाई पाकिस्तान के पास जो वेपन सिस्टम्स है वो सेफ और सिक्योर रहेंगे, टेररिस्ट अटैक नहीं कर पाएंगे, तो उसको रखेंगे कैसे। तो उन्होंने इनको टेक्नोलॉजी दी थी और इनको सिखाया था भाई कैसे रखना है उनको। इसमें भी ऊपर से कुछ भी हमको पता नहीं लगता है। आप देखेंगे कि दो तरफ को आई रियली डोंट नो हाउ टू शो दिस। ये राज 47 का येलो वाला जो है वो EN दिखाई दे रहा है जहां पर, वो एक है एंट्रेंस, और राइट जो साइड ग्रे को भी रूफ है वैसे सर, ही। द ग्रे रूफ। Yeah, the grey हाँ huts, those are the ones, that is the main entrance. वहां पर नीचे जाने के लिए रास्ता है, और ये 3 और 3 6 जो दिखाई दे रहे हैं in opposite direction, they are the ones where support vehicles will be kept. और हम इसको बनते वक्त देखेंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। वाओ। So you know how and what kind of system they have constructed underneath. They have dug out that area. उसमें खुदाई करके उसमें सिस्टम्स लगाई हुई है, और इसको डबल एक्स कहते हैं, और दूसरा उन्होंने बनाया है वो भी मैं दिखाऊंगा इसके बाद। इसमें अगर आप देखेंगे ये छोटा वाला जो एक्स है, उसके बीचों बीच आपको एक सर्कुलर छोटा सा वो दिखाई देगा। तो उसके ऊपर जनरली रख के वेपन्स को टर्न किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अ टर्न टेबल। So those turntables also have been constructed there so that the weapons can be, shifted from one side to another, or whatever they want to do, whether it is for storage or taking it out from there. तो ये दोनों तरफ के एंट्रेंसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ का एंट्रेंस इसमें दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है, वो बाद में बनाया गया था। तो ये ऐसे बनाए हुए हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट वन। और ये खुशदार है। खुशदार में भी, इसमें भी देखेंगे आप तो 2 एंट्रेंसेस आपको दिखेंगे, और 6 जो है वो सपोर्ट गैरेजेस है। इसमें भी आपको ऊपर से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो इवन इफ यू हैव अर्थ पेनिट्रेटिंग वेपन्स, you are not really sure whether you have hit a correct place or not. अब इसमें X है, अंदर क्या है आपको मालूम नहीं है, तो आप हिट कर रहे हो तो कहाँ पर हिट करना है, X के कौन से कोने में वेपन रखा हुआ है वो हमको पता नहीं रहेगा। That is the kind of secrecy Pakistan is trying to bring in here, and this has come with the help of the US. That those days when I discovered these places, I really used to feel very bad because I had a number of friends who were always saying okay, US is friendly to India also, but then sometimes I do have my doubts, whatever their constraints or whatever the geopolitical constraints that they have.
is really unfathomable to me. You know, when you are giving such technology to the people who really can never be relied upon. So next slide please. तो इसमें ये वाई बनाए हुए थे, ये किसी और इलाके का है जहां पर इन्होंने बना के छोड़ दिया था, इसको फिर दबा दिया था। ये एक्चुअल लोकेशन जो कुजदार का दिखाया मैंने अभी वो नहीं है, पर जनरली उससे ये पता लगता है कि हाँ भाई ऐसा सिस्टम इन्होंने वाई का सिस्टम बनाया है। उधर एक्स बनाया था हैदराबाद में, जो हैदराबाद पाकिस्तान का हैदराबाद है उसमें, और कुजदार में इन्होंने वाई सिस्टम बनाया है, एक छोटा वाई और एक बड़ा वाई। एंड सिमिलरली इसमें भी वही टर्न टेबल्स बने होंगे, पर इसमें वाई में कम वेपन्स स्टोरेज किए जा सकते हैं। Sure. But this is something like what the US has in Albuquerque, you know, where they can have massive storages underground. That is the one, उसको हैंगर कहा जाता है, जो स्टोरेज सिस्टम उन्होंने बनाया है, that is called hangar in Albuquerque. So Albuquerque is one from which they have learned this particular, technique of going underground with these weapons. ये है नेक्स्ट वन, ये है हवेलियां। ये बहुत ही पुराना इमेज है, अभी आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको मिलेगा नहीं ये इमेज। ये बहुत पुराना है, ये तकरीबन 15-16 साल पुराना है। तो ये जब बन रहा था तब की बात है, ये अंडरग्राउंड उन्होंने टनल्स बना रखे थे। अभी ये टनल्स इतने आगे तक, जैसे रोड के लेवल तक इनके टनल कवरिंग्स आ गई है। तो उन्होंने इंश्योर किया हुआ है कि ये टनल्स ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल बनाए हैं। तो हमको किसी और तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तरीके बहुत हैं और आई डोंट वांट टू डिस्कस देम हियर ऑनलाइन, बट देन तरीके हैं, हर एक के पास हर चीज का तोड़ होता है, हर चीज का तोड़ होता है। जी जी जी, वो तो सब चीजें हैं, तो हमारे पास भी इन सब का तोड़ होगा, वो छोड़ देते हैं। सर्टेनली सर्टेनली। और इनको ऑब्वियसली आई एम श्योर एट योर बिजनेस आपको इन चीजों के बारे में पता होगा, बट एनीवेज वो अलग की बात है। वो बस हमको इतना पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास तरीके हैं, दैट्स इट। हाँ, और हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे हम इन चीजों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। अच्छा, ये है जो चाइना और पाकिस्तान का मेल जोल है जो बढ़ रहा है, ये इन चीजों से दिखाई देता है। ये चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन है जो कराची में डॉक्ड है। तो ये जब आए थे यहाँ पर कराची में, जनरली न्यूक्लियर सबमरीन्स ऐसी होती है कि किसी और देश में कहीं भी बाहर, जो खुद का देश है वहां से बाहर कहीं भी वो ऊपर नहीं आती, सरफेस नहीं करती, किसी भी कारणवश वो ऊपर कभी नहीं आते जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है। तो ये पहली बार हुआ है कि जो चाइना ने करके दिखाया है। उन्होंने ये दिखाया कि उनकी दोस्ती कितनी क्लोज है, ये दिखाना चाह रहे थे। पर मेरे हिसाब से, जैसे आप देख रहे हैं ना इसमें, जो ये आप यहाँ लाइंस देख रहे हैं, जो वो है कंटेनर्स रख के उन्होंने ये फेंसिंग टाइप का बनाया हुआ है। तो ये फेंसिंग जो बनाई हुई है कंटेनर से, इससे भी ये पता चलता है कि वो किसी और को दिखाना नहीं चाहते थे। इसी का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी या नेवी को भी शायद उन्होंने उस टाइम परमिट नहीं किया होगा उसके नजदीक जाने के लिए, पर वो दिखाना चाह रहे थे कि हाँ हमारी दोस्ती इतनी क्लोज है, और फिर भी वो नजदीक आने नहीं देना चाह रहे थे। ये सब दर्शाता है ये पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेज कि उनकी दोस्ती होने के बावजूद उन्होंने ऑन बोर्ड उस न्यूक्लियर सबमरीन पे किसी पाकिस्तानी को
बुलाया नहीं होगा, ये मुझे लगता है। तो डिपेंड्स कि कैसे पाकिस्तान ने कैसे लिया होगा और कैसे क्या किया होगा। ये बेसिकली इस चीज के लिए है कि उनको, चाइनीज को शायद चेक करना था कि कितना, मतलब with their sonars they must have checked so many things, in and around in Arab Sea and Indian Ocean, and they had gone to Sri Lanka also, and then through Malacca Straits they had gone out. So that way, they must have studied the underwater, the terrain underwater, so that next time when they, in an emergency, when they are traveling there, the submarines, जब वहां से गुजर रहे हैं, तो उनको रास्ता पता हो, उनको पता हो कि हाँ भाई कहाँ खड्डा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ क्या है, ये सब पता चल जाता है। तो ये और तो एस्केप करंट पॉलिसी है कितना जो, है। भागना कैसे है ये वो पॉलिसी है, लड़ना कैसे की पॉलिसी नहीं है ये तो। आप बोल नहीं रहे हो बट मैंने पकड़ लिया है इस चक्कर में। हाँ, ये तो भागने की तो पॉलिसी है। भागने की पॉलिसी भी कह सकते हैं, पर जनरली मतलब एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी करते हैं। उनके पास दूसरे भी शिप्स है जो कि आके उन्होंने मतलब सर्वे किया है। लार्ज नंबर ऑफ सर्वे शिप्स हु हैव डन survey in Bay of Bengal, in Arabian Sea, towards the coast of Pakistan also, they have gone and done the surveys. A number of their ships have, I have written about it also. तो वो भी उन्होंने किया हुआ है। पर ये दर्शाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ न्यूक्लियर सपोर्ट चाइना की तरफ से पाकिस्तान को हमेशा मिलता रहा है, ये बड़ा क्लियरली दिखाता है। नेक्स्ट, दिस इज अनदर सिमिलर इमेज। जो साथ में शिप है वो भी चाइनीज है, वो जनरली सपोर्ट शिप्स होती है, जो अगर सबमरीन को कुछ हो जाए तो उसके रेस्क्यू के लिए होती है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, these are some of the wars that Pakistan faces, the terrorism. This was one interesting case I had seen, which I must explain. This the Osama bin Laden compound कहते थे इसे, अबोटाबाद के पास था, जो पीएम है उनका काबुल में, उसके बिल्कुल नजदीक ही था। तो ये अभी डिस्ट्रॉय कर दिया है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो ये है जो 2 मई का है, मतलब 1 मई को अटैक हुआ था और 2 मई को सुबह 10:51 पे ये इमेज लिया गया है। नेक्स्ट। और इसमें ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। हेप्टर इमेज, जो उनका हेलीकॉप्टर गिर गया था वहां पर एक्सीडेंट होके, और उनको उसको डिस्ट्रॉय करके उन्होंने, अलग अलग तरीके होते हैं डिस्ट्रक्शन के, वो सब करके छोड़ा था। पर फिर भी उसके जो अवशेष मिले होंगे उनको, द रेमिनेंट्स वेर कैरिड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, certainly they must have been given to China, and China must have reverse engineered it in a big way to gain that stealth technology that they are adopting in their helicopter systems nowadays. Now we see that they are using stealth technology in quite a bit of things. Yeah, let's go to the next one, please. And this is the mock-up, CIA mock-up था, ये US में बनाया गया था, और ये 15 फरवरी की है। अटैक हुआ था मई में, ये 15 फरवरी की इमेज है। तो मतलब ये उतना पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको पता था कि हाँ वहां पर कौन रह रहा है। So next one, and this is another mock-up. Guess which place is this? Well, this is China. This is training area of China. Imagine China is going to such levels, they're stooping down to such levels कि वहां अगर
ओसामा बिन लादेन का घर तोड़ दिया है, तो यहाँ हम बना के उसको रखेंगे। अब इसका कोई मतलब नहीं है उनके ट्रेनिंग एरिया में होने का, पर उन्होंने बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर पता नहीं क्या पढ़ाई करते हैं क्या नहीं करते हैं। But when we see their, actions and reactions in the UN, especially against the terrorists, we are trying to list certain people as terrorists, and they are not permitting that, especially uh, the LET and JEM, these kind of people, they are trying to stop through their veto power. That is what China is trying to do. This is how you know that China is also supporting terrorism. Yeah. I अच्छा. mean, this is amazing, sir. मैं सही में बोलूँ आपको, this I think I'm going to openly invite you for the next round of this. इसके ऊपर हम अच्छा. लोग और बात करनी Do चाहिए we हमको, do we क्योंकि have time? Do we have time? These are sir, the let's take another 5 minutes. After that, there are loads of questions that have come up from the audience also. अगर पाँच okay. सात मिनट, let's do So this, and then we'll do this. And guys, I'm gonna just promise you guys, I'm gonna plan another show for this. okay. Let's just go faster over the slides. This is I'm Badomali inundation. This is in that bowl opposite Samba Pathankot area of ours. Okay, that is the place where they know that we will try to get in and straighten the border. तो इन्होंने बड़ोमाला इनंडेशन प्लान बनाया था, जो रेलवे लाइन और रोड होता है वो हर जगह पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, दे मूव पैरेलल टू ईच अदर, एक साथ चलते हैं। तो इन्होंने क्या प्लान, और वो जमीन से थोड़े ऊपर होते हैं, उठे हुए होते हैं। इन्होंने प्लान किया कि उसके बीचों बीच पानी डालेंगे और हमारे फोर्सेस के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर देंगे। ये तकरीबन डिस्टेंस होता है 100 से 200 मीटर का, और उसमें पानी भर के वो कैसे करते हैं वो देखिए, नेक्स्ट इमेज में दिखाई देगा। Yeah, now is the water which has been filled into the particular portion. तो इससे पता चल जाता है कि इन्होंने कैनाल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि यहाँ पर रोड और रेलवे के बीच का एरिया ये पानी से भर देंगे, और हमारे जब फोर्सेस जाएंगे, स्पेशली और टैंक्स, they will have difficulty in crossing this kind of an obstacle. Yeah, next one please. Yeah, this is the armored units which had moved from Khadiya to Gujranwala. Yeah, next one. That entire division had moved, in very short time. Obviously, they must be planning to raise some new formations because they are buying tanks from China. They're producing their own tanks also. They're very, vintage tanks which Pakistan produces, but they do produce some kind of tanks. So next one, ये गुजरांवाला के ये, these are the tank transporters. You can see very clearly जो पीछे टैंक इसके ऊपर चढ़ाते हैं और इसको बाय रोड मूवमेंट हो सकता है टैंक्स का, तो टैंक्स के ट्रैक्स को प्रॉब्लम नहीं होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट, ये सी सुल्तान है। These are for recce of the coastal areas. They generally move from Karachi to Ormara and back. Sometimes they go to what is that place called, Turbat. तुरबत पे जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं। तो ये यूज किए जाते हैं फॉर रेकी ऑफ द कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट, yeah, these are, China has been having, Pakistan has been having these problems of, landslides and
floods and things like that. This one is the landslide of 2010 when the Karakoram highway had gone underwater for almost 30 kilometers. 30 kilometer of Karakoram highway was underwater. You can see it in the next images. You can go faster on the images. Next one, please. Yeah, this is a satellite imagery. A lake was formed called on the Hunza River. So you can see the kind of lake is increasing in size. This is 2nd May. 10th of January, the landslide had occurred and stopped the river, and it built up. And it continues even today. The lake stands the way it is. Next one, please. Yeah, now it is 22 kilometers. It went almost to 35 kilometers. I don't know if I have that slide or not. Next. तो ये शिस्कट वगैरह जो उनके विलेजेस है वो सारे पानी के नीचे चले गए थे और वो पानी में ही है, अभी तक पानी में ही है. उनको कोई वो नहीं मिला है, कंपनसेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है. और वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में है ये एरिया, और गिलगित बल्तिस्तान में तो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो मतलब ट्रेटर्स है. जब भी वो बात करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम ट्रेटर्स हो. तो वो बोलते हैं आप हमको अपना मानते ही नहीं हो, तब ट्रेटर्स कैसे हुए थे. चलो नेक्स्ट वन. So this is basically the kind of wars, and you know, Pakistan must remember what had happened in 71. They keep forgetting, and they keep thinking that we still, you know, an army and air force of 1971. But they must know that things have changed for better in a very, very big way. So there are a few slides, 4-5 slides, which I put of 1971 vintage. You can show them if required. Yeah, this is Kurmitola. Kumritola, huh? Yeah, Bangladesh. It's a beautiful air raid. Yeah, this is the way the runway was hit, and we only hit the runways, and nowhere else we had hit. We had made sure that you know, there is no danger to the civilian life. Yeah, I think if your questions are there, we can. Oh yes, sir. I think this मैं ये तो चलता रहेगा, हमारा खत्म नहीं होगा नहीं मेरा नहीं भाषण तो. मैं वही बोला, मैंने वही बोला कि हाँ, मैं सर को दोबारा लेके आऊंगा, बिकॉज ये सब जो आपने आज बताया है सर, यू नो, इसके बारे में तो दोबारा बात करनी पड़ेगी. ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बारी में ये निकल जाएगा, बिकॉज जरूर करेंगे, दिस इज अ जरूर करेंगे. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. एंड सबसे पहले मैं बोलूं सर, हमारे पास अभी ऑलमोस्ट अबाउट 950 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे. ग्रेट. 950 people almost are watching. एंड गाइस, यार क्वेश्चन तो ठीक है, आप घुसने से पहले जरा उसमें घुसने से पहले अभी 900 लोग देख रहे हैं. वी नीड टू लुक एट वन थिंग वेरी क्लियरली कि यार कितने लाइक्स आपने डाले हैं. ठीक है, 352 likes are there. We need to make it 600 minimum. So please help me out, like this video because it will reach maximum amount of people. देखिए काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, एंड लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, आई विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, जो पाकिस्तान का जो थ्रेट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है यार पाकिस्तान, हट. देखिए, जब एक कंट्री इस पोजीशन पे आ जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, जब वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो एकदम खाई के एज पे खड़ा है, तो वो कुछ भी कर सकता है. सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. And sir has actually brought in a certain amount of realism to the Pakistan discussion. And sir, I am all But very grateful to you कि I आपने must ये stop बताया है. you for a minute. You know, हाँ जी. Adi, the thing is, हमने उनको, you know,
कोने में नहीं खड़ा किया है कि भाई अभी तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है कह के। चारा इनके पास बहुत कुछ है। इनको चाहिए कि उनकी इकोनॉमी अभी इतनी खराब हो गई है, तब भी ये लोग सोच रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। यू you नो know, इनको जरूरी है कि इनको समझाना कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स हर चीज नहीं होती, ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये डिटरेंस के लिए है। और आप खुद भी बोलते हो, किदवाई भी यही कहते हैं कि हमने डिटर किया है इंडिया को, तो वो डिटरेंस है, उस पे पैसा ज्यादा ना खर्चा करें। ये लोग शुरू से ही हमारे से ज्यादा नंबर ऑफ वेपन्स में हमेशा आगे रहे हैं। अगर इनके हमारे 100 वेपन्स थे तो इनके 110 रहे, हमारे 150 थे तो इनके अभी 165 170 रहे। ऐसे मतलब इसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो इनको रियली ऐसा कोई खतरा है नहीं कि जिससे इनको इस्तेमाल करना पड़े। बट यस, लाइक यू आर सेइंग, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी एंड एवरी इवेंचुअलिटी। ट्रू। Absolutely. Absolutely. So guys, like the video, subscribe to the channel, and सबसे most critically, please spread the word. हमारा टारगेट था 50,000 का मंथ एंड तक, अभी 45,300 हो रखे हैं। मेरा प्रॉमिस आप सबसे है कि आप लोग सब पूछते रहते हो मैं हूँ कौन, आईएसआई का एजेंट हूँ कि रॉ का एजेंट हूँ, आप लोग सब पूछते रहते हैं। किसी ने मेरे को एक्चुअली, मैं फनी चीज बताऊँ, एक मेल लिखी कि साहब आप हो कौन, आईएसआई के हो कि रॉ के हो कि कहीं और के हो। मैं बोला यार, मैंने उसको लिखा मैं ऑन 3 सर्विसेज का, मेरे को ना वो तीनों पैसे देते हैं काम करने के लिए, तो आप जो समझ लो कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बट आई हाँ। वुड जोक्स अपार्ट, guys, please spread the word, because let me just say this, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ये मेरा चैनल है, क्योंकि हम लोग काफी सीरियस डिस्कशंस करते हैं जहां पर लॉजिक के साथ और एविडेंस के साथ बात करना करना करते हैं हम लोग। सो दैट इज समथिंग ट्रू। दैट नीड्स टू बी पुट आउट। यू, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू मी विद द क्यूआर कोड अबव देयर, और आप लोग मेरे चैनल में मेंबर बन सकते हैं by clicking the join button down there or sending us a super sticker or super chat. सबसे पहले Naveen, thank you so much for your contribution. He says, looking at Pakistan's current indifference to a path towards assured destruction, economic, political security, subnationalism, etc., etc., I'm worried about MAD, mutually assured destructions, as a deterrence to the nukes. Thoughts, sir? हाँ, well, MAD is really a very old concept. It is, you know, the destruction would certainly be only one way. It will not be mutual. This I can assure you and rest of the viewers and the Pakistanis also. That they must understand that whenever it will be the time for us to use a nuclear weapon, which will always be the second strike. First strike will be made by the country which is trying to hurt us, but the second strike will be so strong, so large, that it will destroy the complete country. They will not have even a single weapon wherever it is lying, whether it is underground, underwater, over the sea, in the air, everything will be destroyed wherever it is. This much I can guarantee you. सर आपने So, एक शॉट the में काफी assured सारे, destruction will be one sided, not mutual. आपने एक एक Yeah. एक झटके में जितने सारे, आई मीन काफी सारे जवाब दे दिया आपने इतने सारे क्वेश्चंस के, कि बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि यार डेटरेंस और ये वो क्या रहेगा उसका। आई थिंक गाइज आप लोगों ने ये सवाल काफी सारे पूछे थे इसके बारे में। आई थिंक सर इज हिट द नेल राइट ऑन द हेड। Naveen, once again, thank you so much. He says, given Pak's dependence on the US and in light of all these TNW, RAAD, etc., shouldn't India develop a Pak-specific joint doctrine in collaboration with the US, creating a more global deterrence? Well, nuclear, policies, I would, advise the government
to refrain from such joint operations or doctrines, as you call them. Nuclear weapons are very, very, personal to that country. We do not share things with any other country, and I don't think we intend sharing that kind of knowledge and that kind of policies. Whatever is supposed to be shared, that is open. We very clearly mention that it is no first use, and no first use means uh, an assured second strike, which will be devastating, which the other country will not be able to withstand. That is the thing. Global Office 2.0, you say, I don't know why, but I believe Pakistan does not have nuclear weapons. They're the biggest liars. Haha, that's a joke. Thank you so much Oh well. for that So comment. they are liars. They are pathological liars. So you really don't know when they are lying and when they are telling the truth. So we have to be prepared when they say zero range weapons. We have to, work out all the contingencies and be prepared for them. That is what I'm sure the Indian government must be doing by now. So, Dipankar Saab says, I wonder how can they do their nuclear test immediately after we did. I think it was a less than a week less than a week after ours. Yeah. So that is the time when Vajpayee ji was the prime minister, and he had very clearly stated that India knew that Pakistan is going to do its nuclear test, and that is why we did We did before them. first. We were already prepared. We were prepared much before. After Indira Gandhi had setting the things in motion, we were all prepared for the next test, but we were not likely to do it for a long time because we did not need to do it. But once we gained the intelligence that Pakistan is going to do it, we did it before them. This is what was said those days. So, Thank you. Priyanka, Priyanka ji asks, I see Pakistan is pretty much sure about Abhinandan didn't shoot down an F-16. Even USA affirms it. So, what is the truth? प्रियंका जी Oh, आपको तो well, पता होना चाहिए आप बड़े आप आपका थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है बट आई थिंक आपने ये चांद से that पूछा है time, ताकि सर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें आप that is the time when everybody was trying to show photographs and all that. जी जी So जी जी somebody had quoted Jane's. I think Jane's had showed some हम्म, photograph where जी यस Pakistanis had got their F-16s from Jordan, and the caption under that photograph was totally wrong. The number of J-16Bs, that is the dual seat aircrafts, they were different. The quoted number was 4, whereas the photograph was showing 5. So I had pointed it out and said, "Ki bhai, where is this fifth one gone? Now you tell me, where is that fifth one gone? Whether it is Abhinandan has shot it down or they have shot it down themselves, we really don't know." But then that fifth one was never accounted for. never it's still not mind Yeah. waves thank you so much for your contribution ask Adi he says should we just sit back and wait for them to implode instead of engaging them militarily Yeah, and that is also a great policy, waiting for them to implode. But whenever they implode or explode, it is going to hurt us. That explosion, it will not be isolated in any way. So it is going to impact us, we being their neighbors, and we really cannot choose our neighbors. We have, in fact, carved our neighbor out of our own body, kind of. Uh, so there it is. It will affect us in every way.
Shri Hegre says, wow, unbelievable. Pakistan has good plans. It's unfortunate we don't have deterrence. Sir, before you say, Hegre ji, you are starkly wrong. Sorry. Yeah. So uh, we don't have deterrence is really not correct. I don't think so. We have been able to stop them and stop even China. China is, Absolutely. of course, they have been more matured in their response in nuclear weapons and all. Although proliferation, they have been very, very active. Ji. But Ji. then deterrence, yes, certainly we have been able to deter with whatever we have and the kind of policies we have and the way we pursue them. There are ways and means. Either you have weapon which is, which can be told to the people, ki, yes, we have this and we can do this, and that has to be communicated. So we have done it in a very matured manner to everyone, what we have and what we are likely to do in case somebody else attacks us first. So that Absolutely. leeway we have given to everyone. Okay, first you will attack, we will suffer casualties, certain amount of casualties, but then second one will be ours. Second strike will be ours. So there are two questions which are pretty much the same. So allow me to take both of them. Adi, please recall Mr. Rajnath Singh's statement that no first use policy can change anytime depending on circumstances. Maybe it was just plain posturing, but actually carried a hidden meaning. And Jakpreet ji says, but Colonel, India can develop tactical nukes at as a deterrent against the Chinese invasion. Shouldn't we change the no fuse first use policy as a last resort in case of massive invasion? So both of them kind of hint on the same thing, sir. Yeah, yeah. So this, tactical nuclear weapons are basically for going through a kind of escalation ladder. So somebody like Pakistan who's going in for tactical nuclear weapons because their policy is of first use. They claim that they will use it first. Even US does that. Even the Russians do that. But then our policy is totally different. We say we will never use the nuclear weapon first. And that is why we do not need tactical nuclear weapons at all. Although I'm sure by now we must be having that kind of technology to create any kind of weapon system, especially the nuclear weapon system I'm talking about. And we will be able to do it, but we do not want it because we do not want to go through that escalation run, because it will be then playing into the hands of our adversary. Say Pakistan uses landmine, so we use an artillery shell, and then they use a NASA missile, and then we use something different. Then we are playing into their hands. That is not the way we will be fighting a nuclear war. We have very categorically said that our second strike will be very, very assured strike. It will be total destruction of that particular country and its nuclear arsenal wherever it is. That is very clear. So the tactical nuclear weapons for India is really not correct thinking in that way. Although I've heard many think tanks, especially in the UK, wanting us to have tactical nuclear weapons, but I Doesn't make sense, sir. vehemently, yeah, our policy is different. It doesn't suit our policy, whatever our Actually, if goals I are. yeah, Yeah, I was actually reading a paper on this, sir. As a matter of fact, the clearly states that we need to preserve post the first use, whatever it does happen, we need to preserve. And the second use, which is our policy, should be so massive, so yeah, destructive, and a short destruction must be there. And as a matter of fact, there are reports coming out from various different international forums. Nobody in India dares to confirm it, that India is increasing its nuclear stockpile by 5 to 8 warheads a year. Now,
I can't prove this. I read it in a report, and you guys know बहुत चीजें जाती हैं आसपास. But believe it or not, I don't want to start any rumor of any kind or anything like that. I'm just mentioning something I read in a nuclear paper which was done by one of the European think tanks. So, True, India's true. strike Because capability is not. we are not only comparing ourselves with Pakistan, but to China also. So, in case we are going to fight with China tomorrow, we have to be prepared. They have gone uh, like the US is calling it strategic outbreak. From 250, they've gone to almost 1,200 weapons. I mean, that is kind of weaponry which is, mm, unthinkable. And most of it has gone, in silos. So that is really, again, it depends what kind of alerts that they have. And we have to be prepared for that. So obviously, we cannot sit at 150 throughout our, journey in this geopolitical situation or arena. So we have to be prepared. I'm certain that our people are also doing the right things, taking the right decisions, and well, let's hope that they are increasing. I So really don't know. I don't read India, so I have no knowledge of Indian number of no, no, weapons no. and I all. mean, you don't need to substantiate. So this is something that Yeah, I am putting on myself. I read this. Sir has yeah. been in very sensitive positions, and I don't expect sir to even substantiate what I'm saying. Let me make that very clear. This is my opinion, not sir's. JB, thank you so much, brother, for your comments all the time. So, two mystery, पाक के कितने nukes हैं और आदि कौन है? आदि तो आपके सामने है नहीं, और नहीं, नहीं, तुम सर मत पूछो, ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है पूछने के लिए, तू है कौन भाई? अच्छा Hats off, sir. Even after retirement, doing so much work, or our Pakistan. I don't know if you are from Pakistan, brother, because but in any case, our Pakistan Army officers enjoying lavish lifestyle. Looks like it you are, but thank you so much for your contribution. JBJP once again. Punjab is 200 into 1,000 kilometers area. Depth is too little. Yeah, of course it is. yeah, that is advantage India. Absolutely, sir. Rajesh Prajapati says न्यू का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, इसलिए चाइना का नया मैप आया है जिसमें अरुणाचल और एक्साइचिंग आ गया है. साहब, अरुणाचल एक्साइचिंग चाइना के मैप में पिछले 70 साल से है. ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास है. और वो नाम भी बदली कर देते हैं। वो नाम चाइनीज में लिख देंगे तो वो क्या चाइनीज हो जाएगा? कभी नहीं। और सर वो बेस्ट चीज है, पिछली सभी बारी को मैप पता है, निकाला था. पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि उन्होंने एग्रेशन किया है तिब्बत के ऊपर। तिब्बत भी उनका एरिया नहीं है और तिब्बत जो नहीं है. आज के तारीख में वो तिब्बत दिखाते वो नहीं है, उससे भी आगे है। जो टिबेटन ऑटोनॉमस prefectures they call them taps. जी. So those prefectures are also part of Tibet, erstwhile Tibet. So इवन आज के तिब्बत के आगे का हिस्सा भी उनका कभी नहीं था और वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि ये हमारा इलाका है जी, which is really not correct. Zest साहब कहते हैं there is information going around that Pakistan may supply nukes to Saudi Arabia. Saudi is investing in farming. How true is this news? It's not going around, brother. You heard it on Dev Talks. I was the one who was saying Yeah, this. That's my theory. yeah. If you want to see, I have those slides. If you have time and all, I really don't know. Or should we do it some other time? We'll cover this the next time. So Yeah, so we'll Zest, cover that's one answer Saudi that I some need other to give time. you. Yeah, Ji. I great. don't think those. I don't like those. I don't like the blinds who underestimate the enemy Pakistan. Pakistan's 0 meter nuclear weapons are a threat. Yeah, so we have discussed that we are
We never underestimate the enemy, whether it is Absolutely. Pakistan or anybody else, China or anybody else. Never underestimate the enemy. That is India's policy, and we have never done that. And I also said, even if we don't believe that a terrorist can come and use a nuclear weapon in, say, Delhi or something like that, but still we have to be careful. We have to, take proper measures to ensure that the radiation level remains, under control and it doesn't increase. Wherever it is happening, it will be detected, and I'm certain that people in the know would be taking proper, actions to ensure that such things will never happen. Maitri asks, how free are they to use their nuclear weapons, and what extent there is a US and Saudi angle, and what are the status of our deterrence and power balancing? So we'll take another 5 minutes and finish about five questions. So up Okay, to you, sir. okay, no problem from my side. Okay, the Saudi angle we'll cover some other day. So I'll show you the Saudi locations also, and how they are, and whether Pak is supplying, China is supplying, or whatever is happening there. We'll talk about it some other day. Okay, but okay, what was it about? Something was US, no? The So how US. much of a free hand does the Pakistanis have, and how much of a hand does US play in the use of Pakistani nuclear weapons? US does make sure that the their weapons are secure, but then, as the saying goes, who will stand guard to the guards themselves? अगर कोई गलत आदमी गलत करना ही चाह रहा है, उसके दिमाग में गलत चीज, whether it is religious animosity, whether it is fog of war, whether it is, the dismemberment of their East Pakistan, or whatever is the reason that he has in his mind. And if he is, these are human heuristics, he can go ahead with it if it is in his hands. That is the thing which is very, very dangerous. And I am certain that everybody, including the US, are taking care of every time that such a statement comes from any, senior personality like General Kidwai, especially Kidwai. Yep. He's quite amazing, sir. Sir, with deployment of our Navik satellites, is it possible to monitor activities in these sensitive areas? We are doing it. We, I'm certain we must be doing it. And Navik also has other things also. The Navy is also using it in the Indian Ocean region. Other places also. I'm certain more satellites will also be coming, and with greater visibility and faster visibility, the rate will be much faster covering those मेरे भाई areas. public demand, we need this guest again. So, sir, अब तो आप फंस गए हो. Oh, thank you so much. I'm honored. Somebody thinks somebody wants to hear me again. अरे नहीं सर, आप now trust you me, there are personal messages coming here and telling me कि सर को जरा schedule में डाल दो, सुनना है सर से काफी कुछ. So Thank you so now much. you're part of the Dev Talks family. So what is the winning Yeah. possibility if Bharat tries to denuclearize Pakistan, kinetic or non-kinetic? अभी Heavy questions, I know. nuclear and non-kinetic different. Well, non-kinetic and nuclear are different things. No? So okay. So denuclearizing is you can have it with a matured neighbor, but somebody who's a pathological liar, like I said before, and I keep saying it, Pakistan is a terrorist state and they are pathological liars. When such a country is there,
even confidence building measures, whatever we had instituted, they have not fructified, whether it is track one, track two, policies, whatever people have gone and talked, and whatever happens, that all comes back to the same place again and every time with some or the other terrorist act. And this time around, when we did Balakot, I'm certain that they have learnt a lesson and they would not dare again to do such things. But then you never know. We have to be prepared for anything and everything what comes out of Pakistan. So Absolutely. denuclearization, yes, certainly we would love to have that kind of situation, but then that cannot be with one country alone. When Pakistan and India are denuclearizing, and China, which is sitting next to us and threatening us every other day, coming, bringing their army forward onto our areas and occupying further areas into India, and then going back. Crazy kind of a situation which is happening with China, and they are also a nuclear power. So we really cannot do it one way. It has to be both ways. If both, yes, China and Pakistan think of denuclearization, yes, certainly we must go ahead. We are, in the army, we are never for a war, although we prepare for it, but we never go ahead and say, let's fight a war. We are prepared. We are there to assist the country. We are ensuring the country's freedom. But we are never for a war. We want always peace. And peace, like he is saying, through kinetics. Peace through kinetics, we say. So Yeah. Kun says, sir, our defense is only for big cities. What about the smaller 2, 3, 4 tier cities? Are they vulnerable to airstrikes? As an example, the Siliguri corridor, Chicken Neck, 33 core headquarters. That's not a tier 2, 3, 4 cities, brother. I'm certain we are Tier doing 3 much plus better. city. We're doing much better in air defense. Air defense had separated from the RT long time back when I was in service. It's been a long time that they are, surviving in the army, and they're doing well. They are covering each and every areas. When I was commissioned, we could see only ZU-23s, parked everywhere. But now things are different. Yeah. Everything is available. The few things which are lacking, like BMEW radars, are not there. Very few radars are there. But then other countries are helping us. We have a good system which can detect incoming missiles in time, and we'll be able to take action. Yes. And the last two, sir, JP says, Adi, just take it as a joke. Colonel, sir, you're awesome. I always take it as a joke, brother. Aapne- You're a funny man. But sir, compliments to you for this presentation. He's a pretty much a regular and he's quite light-hearted. So Okay. he likes to pass such comments. And Heyman Saab, thank you so much for your contribution. Highly regarded. But guys, I mean that's the last of it. I'm not going to take more because we're at almost 1 hour and 30 minutes. As it is, a lot of you crib at me and you guys shout at me that your podcasts are too long. 30 मिनट का पॉडकास्ट करो क्या तुम इतना टाइम लोगों के पास टाइम नहीं होता but in any case the podcasts have to be long because that's when the explanation and the details come out as what we've seen today. Trust me, I would have loved to continue this and I'm going to grab sir and get him back for another podcast where Yeah. हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे एंड थोड़ा सा और समझेंगे न्यूक्लियर वेपन्स भारत के थ्रेट के लिए Certainly. और आगे आगे क्या-क्या चीज़ें हम सर से सीख सकते हैं, वो सीखेंगे. Sir, thank you so much. It was a pleasure having you and, Thank you so much. great to have you here Thank and you I'm so much, sure Adi. Thank you so much. I really enjoyed talking to you all and answering all these questions. It was really great. I enjoyed myself. Thank you so thank much. you, sir.
Jai I Hind. hope people have learned something from me, and they will study further to learn more on the subject. So, Absolutely. And I'll thank just you. close by this comment. He says, "This has provided a level of realism that was lacking. Thank you, sir." And Jai Hind. So, on that note, sir, thank you Thank so you. much. Thank Jai Hind. you, and Jai Hind. Bye bye.